अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह, वेलकम टू माय चैनल दिस निकाबी गर्ल। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं डॉक्टर जाकिर नाइक की एक वीडियो पर जो है इस्लाम और वेस्ट को लेकर। देखिए, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो मैं अक्सर इस चीज़ का जिक्र करती हूँ कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो लोग हैं वो इस्लाम को लेकर, मुसलमानों को लेकर उनका परसेप्शन बहुत एक्सट्रीम है। यानी कि वो सोचते हैं कि मुसलमान या तो टेररिस्ट होते हैं, मुसलमान हैं तो बदतमीज़ हैं, चोर हैं, मतलब हर तरह की बुराई है मुसलमान में। तो ऐसा परसेप्शन बन क्यों गया है? इसका वाहिद रीज़न है कि हमारा वेस्टर्न मीडिया जिस तरह से मुसलमानों की इमेज क्रिएट कर रहा है, उनको दिखाना चाह रहा है सोशल मीडिया के ज़रिए। मूवीज़ आप देख लें कितनी हैं, और उसमें एक दकिया नोज़ जो कि मुसलमान की असल इमेज होती भी नहीं है। आप अक्सर मूवीज़ में देखेंगे, बॉलीवुड मूवीज़ को ले लें जिसमें मुसलमान सुरमा लगाया हुआ होगा, गले में रुमाल डाला हुआ होगा, सर पे एक टोपी होगी, हाथ में तस्बीह होगी और वो टेररिस्ट होगा। जबकि मुसलमान असल में आम तौर पे चलते फिरते नहीं हैं, इतना गहरा सुरमा लगा के, हाथ में तस्बीह, रुमाल गले में डाल के। नो, दिस इज़ नॉट हाउ इट इज़। लेकिन कुछ मीडिया परसेप्शन की वजह से लोगों के दिमाग में बिठा दिया गया है कि इस्लाम एक बुरा कल्चर है, एक बुरा बिलीफ है, तो इससे कोसों दूर रहें। तो यही वजह है कि अगर आपने मेरी स्ट्रीट दावा की वीडियोस देखी होंगी, बहुत से लोग भाग जाते हैं जब उनके सामने हक वाज़ेह होता है, ट्रुथ रिवील किया जाता है, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते। इवन दो एक औरत की जब मैंने आपको एक वीडियो दिखाई थी, जब मुफ्ती उस्मान उनको दावत देते हैं दीन की, तो वो कहती हैं कि मेरे तमाम बिलीफ जो है ना वो मुसलमानों जैसे ही हैं, लेकिन मैं मुसलमान कहलाने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो वो क्यों तैयार नहीं थी? हालांकि वो सब चीज़ पर कन्विंस थी कि हाँ, खुदा एक है और प्रॉफिट जो है हज़रत मोहम्मद वो आखिरी पैगंबर थे और वो सिर्फ प्रॉफिट हैं, वो अल्लाह के सर्वेंट थे। लेकिन वो हर चीज़ को एक्सेप्ट करने के बावजूद भी अपने आप को मुसलमान नहीं कहलाना चाह रही थी। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप देख सकते हैं। तो ऐसा क्यों है, आज इसी का आंसर डॉक्टर जाकिर नाइक बहुत अच्छे से इलैबोरेट करेंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ। Why do you think, from your experience, so many people in the West are intimidated by Islam? What do you think? Very good question. The brother asked the most important question of the session. That if I talk so good things, why is the West so intimidated? It is because of the media. Today, there is virulent propaganda regarding Islam on the international media, whether it be international channels, international radio stations, the newspapers, the magazines. According to Time magazine, in a span of 150 years, from 1800 to 1950, there were 60,000 books written against Islam and the Prophet. 60,000. Now it's increased. So depending upon how the media portrays Islam, and you might have heard, I said the solution for terrorism is there in Quran. I said that. You heard the answer of mine. But the West is blaming Muslims to be terrorists. Right or wrong? Yeah, right. My government is saying that I'm a terrorist. Do I look like a terrorist? No. Yes, but the government is saying that. What do we have to do? That's what the people are saying, that my last and final messenger, Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, was a terrorist. I don't agree with it. So what we have to do, we have to practically demonstrate. So the reason whether the West is intimidated, because the West is afraid of Islam. Why it's afraid? If Islam is successful, then people won't be able to flirt around with their girlfriends. They won't be able to do fornication. They won't be able to do adultery. They won't, they will not be able to have alcohol. They'll not be able to gamble. This is all, I would say, a fictitious happiness. There's something like true happiness and fictitious happiness. I, being a doctor, when you have alcohol, you feel high. It is a temporary, fictitious happiness. Islam talks about permanent, factual happiness. And the permanent, factual happiness can only happen if you accept Islam. See, I've been taken away from my country. You know, I did hijrah. You may not be knowing my background because I speak like that. And the non-Muslims in India love me. So when the non-Muslims love me, the government is afraid. So when the non-Muslims of India start loving me and start praising me, the government tells I'm a terrorist and I'm out now. But they took away all my wealth. For me, I'm very happy. Because happiness is a state of mind. So my job as a Dai, brother, is to remove the misconceptions of Islam.
So I've given the talk on, is terrorism Muslim monopoly? I've given statistics that the first hijack was done by non-Muslim. The first assassination, non-Muslim. You see, except for the last 20, 30 years, you see the history, there are hardly any Muslims involved in terrorist activity. Hardly. And now, there are some Muslims who have been brainwashed by the Westerners. You know, the ISIS, I believe it's a handiwork of the enemies of Islam. It is anti-ISIS, I say. There is no ISIS, Islamic State of Iraq. It is not. It is a handiwork of the enemies of Islam, promoting them to spoil the picture of Islam. How can Islam doesn't believe in killing innocent human beings? The person says, I'm a Muslim, La ilaha illallah, Allahu Akbar, and kills a non-Muslim. It is non-Muslims programming them, paying them. You understand? It's all programmed. So, it is the West which is afraid, because if Islam spread, peace will spread. If peace spreads, you know, I said in my talk yesterday that today the whole economy of the world is revolving around riba, interest-based. And you know that the banks are ruled only by a handful of families. You may be aware of that. You know, a handful of the families. They are controlling the economy of the world. And we think Fort Knox, you know, it is owned by the American government. No, it is owned by a few Jew families. You know that. So they're controlling the world. If Islam spread, the control will go away. Well, Islam believes in equality. Islam believes that all human beings are equal just because the rich are not superior. So because of that, you find that there are a lot of movies made against Islam. There's a lot of media. That's the reason we started our own satellite channel by the name of Peace TV. In English, Urdu, Bangla, Chinese. 4 languages. It's on 15 satellites. And we try and remove the misconceptions about Islam. The moment it became popular, I was not allowed to enter UK. Because when I gave talks, there were 25,000 people. Oh, 25,000 people, problem. In New York, we were going to give a talk in the Madison Square Garden. Now I don't have visa. I went to USA many times. But when there were 2,000, 5,000, they had no problem. When it became 25,000, 30,000, they have problem. The larger the audience, they are afraid that people will come to the truth. So what we are doing, we are going by satellite. So Allah has His ways. So the West mainly is afraid of Islam spreading, because if Islam spreads, then all human beings will be equal. There will not be some few who will be superior. In Islam, human beings are equal. Just because the rich are not superior, we can love each other, we can embrace the other person. So Islam, you get the true happiness. So this talk was based on that the Islamic value of true happiness is a person doesn't have to be rich to be happy. And actually, if you analyze, brother, the rich people are happy. The rich people require tablets to sleep. The person who is poor is happy. So the true happiness is you understand the life, understand the human values, so that we follow the commandments of our Creator. Hope that answers the question, brother. देखिए, उन्होंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन ये करा है कि अगर इस्लाम की उन्होंने ख़राब इमेज नहीं दिखाई ना दुनिया के सामने, तो तमाम लोग मुसलमान हो जाएंगे, सब बराबर हो जाएंगे, कोई किसी दूसरे से सुपीरियर नहीं रहेगा, तो सब बराबर हो जाएंगे, सबकी दुकानें बंद हो जाएंगी, यानी कि जुए के अड्डे जो खुले हुए हैं, एडल्ट्री हो रही है और तमाम गलत काम जिससे इस्लाम रोकता है, माशरे को बचाने की कोशिश करता है, क्योंकि इंसान गलत काम में पड़ेगा तो वो अपनी बर्बादी की तरफ जाएगा, सिर्फ आखिरत में नहीं बल्कि दुनिया में ही उसकी बर्बादी शुरू हो जाएगी। तो इस काम से इस्लाम एज अ होल रोकता है। जब पूरी सोसाइटी ही रुक जाएगी तो ये हैलोवीन जैसे कल्चर्स और क्रिसमस जैसे इवेंट्स बनना ख़त्म हो जाएंगे, और इसमें जो बिजनेसेस प्रोपोगेट करते हैं, कॉस्ट्यूम्स बिकते हैं हैलोवीन पर और क्रिसमस में तमाम तर गिफ्ट्स वगैरह ख़रीदे जाते हैं, दरख्त की ख़रीदारी होती है, एक ख़ास किस्म का जो दरख्त होता है जो हर कोई अपने घर में लगाते हैं। ये तमाम जो कल्चर्स हैं ना, ये पहले सदियों में अगर आप देखें तो ये एग्जिस्ट नहीं करते थे, लेकिन अब ये बिज़नेस स्ट्रैटेजीज़ हो गई हैं। ये लोगों के माइंड को इस तरह से रिवोक किया जा रहा है कि हमारा कल्चर है ये, जबकि ये एक बिज़नेस स्ट्रैटेजी है। तो जो हमारे कल्चर आजकल बन गए हैं वो हमारे बिलीव्स का बिल्कुल हिस्सा नहीं है। अगर क्रिश्चियंस मानते हैं कि जीसस क्राइस्ट क्रिसमस के दिन पैदा हुए थे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जबकि अगर उन्होंने ख़ुद सेलिब्रेट नहीं करी तो हम कौन होते हैं जो जीसस के फॉलोअर्स हैं, हम किस मुंह से सेलिब्रेट करें। सो दे ऑल आर गोइंग अगेंस्ट देयर ओन स्टडीज़, व्हाट द बाइबल इज़ सेइंग।
اس کے علاوہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ بولا کہ ایک تنظیم ہے، ایک ISS کے نام سے، آئی ڈونٹ نو، اس سے مسئلہ نہ ہو اگر میں یہ بات بول رہی ہوں، تو ایسی کوئی تنظیم ایگزسٹ نہیں کرتی. یہ صرف بنائی گئی ہے تاکہ ویسٹرن کنٹریز کی طرف سے ہی، تاکہ وہ اسلام کے غلط کام کو دکھا سکیں، اسلام کی آڑ میں مسلمانوں کو گندہ کر سکیں. جب مسلمان گندے ہوں گے تو لوگ اسلام سے دور بھاگیں گے. اب پہلی صدیوں میں کوئی کسی مسلمان نے جہاز ہائی جیک نہیں کرے تھے، چوریاں نہیں کی تھیں، قتل و غارت میں ملوث نہیں تھے. آنے والے وقتوں میں یہ کام مسلمانوں کی پاکٹس میں ڈال دیے گئے. ان کو جو چند ایک مسلمان ہیں ان کے برین واش کیے گئے، اور ان کو یہ بولا گیا کہ یہ کام کرو گے تو تم جہادی ہو. آئی ڈونٹ نو یہ ورڈ پھر سے بولنا چاہیے کہ نہیں، شیڈو بین کر دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ ایسا اگر ہے بھی، اگر وہ مسلمان ہے تو بھائی کوئی بھی ایسا انسان اسلام کی حدود میں داخل نہیں ہے جو کلمہ پڑھ کے کسی کی گردن پہ چھری چلا دے اور بولے کہ میں مسلمان ہوں. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اسلام میں ایسا شخص اپنے دین سے خارج ہے. اس کے علاوہ ڈاکٹر ذاکر نائک بہت زبردست کام کر رہے ہیں. اب تو ان کو بہت سے کنٹریز میں بین کر دیا گیا ہے، لیکن وہ سیٹلائٹ کے تھرو لوگوں کا اسلام کے حوالے سے مسکنسیپشن ہٹا رہے ہیں. اسلام کے بارے میں جو امیج غلط کریٹ کیا گیا ہے کہ یہ ایک بیڈ ریلیجن ہے، اس میں لوگ غلط کاموں میں ملوث ہیں، قتل و غارت اور چوری، ہائی جیکنگ، اور اس امیج کو ختم کرنے کے لیے ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنا چینل کھولا ہے. ڈفرینٹ لینگویجز میں اس کو آن ایئر کرتے ہیں. تو یہ صدقہ جاریہ بہت بڑا پازیٹیو کام ہو رہا ہے، اور میں اس چیز کو اپنے چینل پہ ہمیشہ پروموٹ کرتی رہوں گی، ایسی کانٹینٹ کو. اور آپ سب سے امید ہے آپ لوگ بھی اس طرح کے کانٹینٹ کو دیکھا کریں اور آگے پروموٹ کیا کریں، تاکہ آپ بھی اس نیکی کا حصہ بن سکیں. تو آپ کیا سوچتے ہیں؟ آپ کتنا انفلوئنسڈ ہیں ویسٹرن میڈیا سے کہ آپ بھی ان کی اس چیز کو سپورٹ کرتے ہیں؟ آپ کے کیا اوپینینز ہیں؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں. آج کے لیے اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.